ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਲਿਏ ਸੈਕਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਲੋਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਆਰ ਦਾ 5 ਸਟੇਟਮੈਂਟ। 5 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਈਕਲੀਨੀ, मीनिंग है एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइप इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। डाइकोगैमी फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। प्री पोटेंसी pollen grain of same flower germinate more rapidly over the stigma than the pollen grain of the another flower। Heterostyly 2 or 3 type of flower with different length of the style। Hercogamy mechanism devised to prevent ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਫਿਫਥ, ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਯੂਰ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਹਰੀ ਅਪ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਰਿਪਲਾਈਂਗ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਿੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਇਰੋ, ਪੈਟਰੋਫਿਲੀ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ, ਹੋਰਥੀਨੋਫਿਲੀ, ਨੀਮੋਫਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਲੀਸਨੇਰੀਆ। ਬੈਲੀਸਨੇਰੀਆ ਦੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਿੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰੀ ਅਪ, ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਸਟ। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और आर ट्रू। एक सही है जो ज़्यादा सही है। फर्स्ट इन द एंड्रोथीसियम लाई बिहाइंड द एपिडर्मिस। एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज पैक्टो सेलुलिजिक इन नेचर। सिनर्जिड आर हैप्लॉइड। द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकल टचेस द ओव्यूल इज कॉल्ड रैफे। सो मैंने उम्मीद है तुसीं पढ़ लिए होएंगे टर्म। तो इन्हां दे ऑप्शन देखते हैं। फस्ट दे विच A and D करैक्ट, B A and B, A and D only, A and C only। Reply fast। Then next question is question number 30। When the pollen is transferred from anther of a flower to stigma of another flower of same plant। plant same है but different flower ਦੇ ਤੇ pollen ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਲੋਗੈਮੀ, ਜੀਨੋਗੈਮੀ, ਗਿਟੋਨੋਗੈਮੀ, ਆਟੋਗੈਮੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਮੈਚ। ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਗਲਤ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡ, ਕੈਨਾਬਿਸ, ਨੀਮੋਫਿਲੀ, ਵਾਟਰ, ਜੋਸਟੀਰਾ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ, ਇਨਸੈਕਟ, ਸਾਲਵੀਆ, ਐਂਟੀਮੋਫਿਲੀ, ਬਰਡਸ, ਐਂਡਜ਼ੋਨੀਆ ਔਰ ਔਰਿੰਥੋਫਿਲੀ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਿਪੀਕਲ ਐਂਜੋਸਪਰਮਿਕ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ। ਹੁਣ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4 ਨਿਊਕਲੀਅਸ 2 ਸੈੱਲ, 8 ਨਿਊਕਲੀਅਸ 7 ਸੈੱਲ, 7 ਨਿਊਕਲੀਅਸ 7 ਸੈੱਲ, 8 ਨਿਊਕਲੀਅਸ 4 ਸੈੱਲ। ਇਹ NCERT ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੋਸਪੋਰਿਕ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਸਟ। I am waiting। Thanks for replying। Next is which one of following statement is not true? Pollen grain are released from anther at 2 cell stage। Sporogenous cell directly behave as the megaspore mother cell। The megaspore divide twice to form the 8 nucleus embryo। Egg and synergid lie near the micropellar end of ovule। आई होप तुसी ये टर्म्स ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
Reply here fast. Thanks for replying. Now question number 34. Which of the following pollination type is caused by birds? पंछी ਜਿਹੜੀ pollination ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? Entomophily, Ornithophily, Malacophily, Charopterophily. If you know the term behind that study of the words, you will easily give the answer. This is the clue for you. Next is entry of the pollen tube through chalice and is called porogamy, mesogamy, basiogamy, syngamy. ਹੁਣ ਚੈਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸ ਜਾਂ ਪੈਕਸ ਤੇ? If you know the structure of a bule, you will easily put this question. Very simple. Next is the anemophily is the pollination affected by water current, birds, wind, insect. Stalk with which ovule remain attached to the placenta is called funicle, raphe, hilum, chaliza. Reply fast. Very easy. Next is masses of the pollen grain, that is the pollinia found in. Pollinia एक structure ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ reproduction and flowering plant ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ term. ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਔਰਕੀਡੇਸੀ, ਸੋਲੀਨੇਸੀ, ਮਾਲਵੇਸੀ, ਗ੍ਰੈਮੀਨੀ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹ 'ਚ. ਕਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਕੈਲੋਟ੍ਰੋਪਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਅਕਰ ਇਨ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ ਐਂਡ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ, ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟ ਐਂਡ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਫੰਜਾਈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ, ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? Reply fast. I am waiting for your answer. Give answer. 39 question. Very easy. Thanks for replying. Next is the genogamy. Is the pollination between two flowers of the different plant. Pollination between the different flowers of the same plant at the same branch. The pollination between the anther and stigma of the same flower. Mechanism of parthenocarpy. Give the answer. 41. Malacophily is the pollination by snail, bat, insect, birds. Next, which one of following is not a device to promote cross pollination? Cleistogamy, heterostyly, hercogamy, dichonogamy. ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ. 43. In nature the cleistogamous flower are self pollinated, insect pollinated, wind pollinated, ਵਰਡ ਪੋਲੀਨੇਟਡ. 42 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 43 ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 42 ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਆ, 43 ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ. ਨੈਕਸਟ 44. ਇਨ ਦ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਈਚ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ MMC ਅੰਡਰਗੋ ਮਿਓਸਿਸ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਡਾਇਆਡ, ਟਰਾਇਆਡ, ਟੈਟਰਾਡ, 4 डिप्लॉयड सेल. एक माइक्रोस्पोर तो किन्ने मदर सैल तो किन्ने माइक्रोस्पोर बनते हैं जो अगे जर्मीनेट होकर पोलन बनाते हैं? Reply here. Next is how many of the daughter cell obtained from the megaspore mother cell result in the matured ovum? 4, 3, 2, 1. कितने daughter cell बनेंगे megaspore mother cell तो? Next is which of the following set represent the egg apparatus in angiosperm? Ovum and antipodal, ovum and synergid, ovum synergid polynuclei, ovum antipodal synergid. ਜਿੱਦਾਂ ਐਵਰੀ ਸੈਕ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ. ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ. ਨੈਕਸਟ ਦ ਐਂਥੈਸਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਮੀਨਾ. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਂਥਰ, ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਫਲਾਵਰ, ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਸੈਪਟਰ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼. ਐਂਥੈਸਿਸ. ਜਲਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ. ਕੰਟਰੀਵੈਂਸੀਜ਼ ਫਾਰ ਸੈਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ. ਬਾਈਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ, ਹੋਮੋਗੈਮੀ, क्लिस्टोगैमी, all of these. Next is which of these cell is the largest cell of the ovule? Antipodal cell, central cell, megaspore mother cell. Size of cell varies from species to species, and species and none of given above can be treated as largest. Reply fast. Thanks for your reply. Question number 50. The entry of the pollen tube into the ovule through the micropyle. पहले चल जाता सीगा, हुण माइक्रोपाइल आ गया. पोरोगैमी, मीजोगैमी, एनाइसोगैमी, चैलिजोगैमी.
टाइप ऑफ पॉलीनेशन इज द कोमिलीना। कोमिलीना तुसी NCERT एग्जाम्पल पढ़ी है। कैजोगैमी होंदी है, गनीटोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी। जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर बट ए नॉर्मल पोलन ट्यूब वाज स्टिल फाउंड बिकॉज। वेजिटेटिव सेल इज नॉट डैमेज। कंटेंट ऑफ द किल्ड जनरेटिव सेल स्टिमुलेट द पोलन ग्रोथ। द लेजर बीम स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। द रीजन ऑफ द emergence of pollen tube is not harmed. Reply fast. Next 53, meiosis is observed in megaspore, megagametogenesis, microgametogenesis, microspore and anthroball, microsporocytes। किन्हां दे विच meiosis हुंदी है? If you know the gametogenesis for male and female, you will give answer easily। पोलन ग्रेन किद्दां बनदा है, माइक्रोस्पोर किद्दां बनदा ते मैगास्पोर किद्दां बनदा है? जल्दी रिप्लाई करो। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शेडिंग ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन डिगदा है स्टिगमा ते पॉलीनेशन होंदी उस वेले किन्ने न्यूक्लियाई हुंदे? 1, 1 और 2, 2 और 3, ओनली 2। जल्दी रिप्लाई करो। नेक्स्ट इज द फीमेल गमेटोफाइट इज आल्सो काइड एम्ब्रोसैक, ओवरी, एंडोस्पर्म, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैरी ईजी। जो तुसी NCERT का लैक्चर सुनिया होगा तो आराम नाल आ जाएगा। सिनर्जिड आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। इहदा भी आंसर 55 दे नाल ही कनैक्टेड है। Sporopollenin is a chemical substance found in Intynopollen grain, Exinopollen grain, Endothecium of Hanser, Tapetum of Hanser। Very easy and very important thing, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्पोरोपोलिलीन। ये तुहानूं करवाई है ते इहदे नाल काफ़ी क्वेश्चनस जो कंपीटिटिव च राइज होंदे ने। नैक्टर इज प्रोड्यूस इन फ्लावर विच आर पॉलीनेटेड बाय। शहद किहਨਾਂ च बनदा है? रस जो हुंदा फुल्लां दा। विंड, वाटर, मैन, इंसैक्ट। जिन्हां च रस हुंदा है वो फ्लावरां नूं पॉलीनेट कौन करदा है? गिव आंसर वेरी ईजी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरैक्ट अबाउट पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन दे नाल इनकरेक्ट टर्म केह्ड़ी है? पोलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्प्रिंजिया। पोलन ग्रेन रिप्रजेंट द मेल गमेटोफाइट फिटिंग जनरेशन। पोलन ग्रेन हैव 2 लेयर्ड वॉल, outer intine, inner exine। Intine is made up of sporopollenin, has a germ pore। Pollen grain are always two-celled at the time of shedding। इस जो गलत टर्म्स ने, गलत लाइन्स ने, उन्होंने आंसर दिओ। सो ऑप्शन तुहानूं दिते ने, ए है सैकेंड एंड थर्ड, बी सैकेंड थर्ड फोर्थ, सी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डी 1 एंड थर्ड। इन्हां विच किहड़ी टर्म्स जो गलत ने? 5 टर्मां तुसीं ध्यान दे नाल पढ़ लो। आई एम वेटिंग, वेरी ईजी टर्म्स। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in some plant the 4 pollen of the tetra do not separate and remain attached forming compound of pollen grain। identify the plant। जो पोलन बनता है, पोलन ग्रेन जो बनते हैं 4 टैट्राड जो है जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो सैपरेट नहीं होंगे तो कट्ठे रहते। एक ये एग्जाम्पल आती है जेनिकस, टाइफा, ड्राइमस एंड ऑल ऑफ दीज। जल्दी रिप्लाई करो। ये थोड़ा टैक्नीकल क्वेश्चन है, असीं बाद में डिस्कस भी करांगे। जे तुहानूं इहदा आंसर आंदा तो प्लीज़ आंसर दिओ। अभी NCERT असीं डिस्कस कीता सी। नैक्सट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्यूल इज़ फाउंड इन फैमिली कैक्टेसी। कैक्टेसी फैमिली च किहड़ा ब्यूल हुंदा है? चारां दे विचों जिहड़ा आंसर टिक करके दसो। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। ये पॉलीनेशन नाल रिलेटेड क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 62। डबल फर्टिलाइजेशन नाल रिलेटेड है। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर किहदा है? ट्रिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिप्लाई फास्ट, इतना टाइम ना लगाओ। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म 2, 3, 4, 5। डबल फर्टिलाइजेशन च किन्ने न्यूक्लिया जो है पार्टिसिपेट करते हैं? सो पूरा प्रोसैस दिमाग च लेके आओ। NCERT का डायग्राम दिमाग च लेके आओ, आराम नाल तुसीं आंसर दे पाओगे। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट मीन तिन्ने क्वेश्चन इंटरलेटेड ने। फ्यूजन ऑफ 2 egg with 2 male gamete, fusion of egg twice with male gamete,
Fusion of one male gamete with egg and another with the synergid. Fusion of one male gamete with the egg and other gamete with secondary nucleus. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਇਨ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ is fusion of the second sperm with antipodal cell and one synergid cell, two antipodal cell, two synergid and two polar nuclei. Very easy, ये भी related है। In angiosperm the pollen tube liberate their male gamete into central cell, antipodal cell, egg cell, synergid. The role of the double fertilization in angiosperm is to produce cotyledon, endosperm, एंडोकार्प हार्मोन। डबल वार फर्टिलाइजेशन कराने का की मतलब है, क्यों होंगी है? फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनी, पॉलिनेशन, ट्रिपल फ्यूजन। हियर दिस इज द वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, हियर तुसी कन्फ्यूज नहीं होना। रिप्लाई फास्ट। थैंक्स। Question number 69, vegetative fertilization leading to the formation of endosperm referring to fusion of male gamete with diploid secondary nucleus, fusion of female gamete with diploid secondary nucleus, fusion of two diploid vegetative cell, fusion of two male gamete. Very easy. 68, 69 are interrelated. See carefully. Reply here fast to me. आई होप तुसी कर ले होंगे। थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। नैक्सट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। एंडोस्पर्म ऑफ द शीड डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस, पॉलीप्लॉइड। जल्दी आंसर दो। नैक्सट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी, स्पोरोगैमी, ऑटोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेरी ईजी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एंडोस्पर्मिक शीड? पी, वीन, ग्राम, कैजियो। जल्दी आंसर दिओ। जिहदे एंडोस्पर्म जिहड़ा कंज्यूम नहीं हुंदा, एल्बुमिनर शीड जिहनूं कहंदे ने। जल्दी आंसर दिओ। थैंक्स। द मिल्की वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट, लिक्विड गैमेट, लिक्विड एंडोस्पर्म, लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, लिक्विड एम्ब्रियो। यह भी असीं कीता है जिम्नोस्पर्म दे विच। सिलेक्ट द करैक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म टाइप। सेलुलर, हेलोबियल, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर, हेलोबियल, हेलोबियल, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, हेलोबियल। तीन डायग्राम दिते ने, तुसीं एंडोस्पर्म की डिवेलपमेंट देख रहे हो। जिहड़ा सही कॉम्बीनेशन उन्होंने काइंडली दसो। ये भी असीं डिस्कस किया है। नैक्सट इज द प्रोडक्शन ऑफ द शीडलैस वराइटी ऑफ द फ्रूट सच एज द ग्रेप, पोमग्रेनेट इज ड्यू टू फिनोमिना फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पार्थिनोकार्पी, सिनगमी। Seedless fruit. Next, identify the wrong statement regarding the post-fertilization event. Ovary wall develop into pericarp. Outer integument of ovule develop into tegmum. Fusion nuclei, triple fusion develop into endosperm. Ovule develop into seed. Post-fertilization develop ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। Reply fast. Thanks. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट इनकरैक्ट। ये तुसीं गलत दसनी है। डाइकोट एम्ब्रियो फर्स्ट डिवीजन इज जनरली लॉन्गिट्यूडनल। इन ग्रास फैमिली कोटिलीडन इज कॉल्ड सेक्चुलम। टेस्टा स्क्रीराइड एब्सेंट। रेडिकल एंड रूट कैप आर इनक्लोज बाय शीट कॉल्ड कोलिराइजा। गलत स्टेटमेंट दसो। नैक्सट इज जर्मीनेशन ऑफ शीड विद इन फ्रूट। ओबीपेरी, बीबीपेरी, हाइपीजियल, एपीग्लीजियल। फ्रूट के जो शीड जर्मीनेट करता है, नवी चीज़ है तुहाडे लई। जे तुहानूं इहदा आंसर आता है, काइंडली गिव मी आंसर। द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट, शीड। ये भी असीं डिस्कस किया होया। वेरी ईजी। पेरीस्पर्म, रेमिनेट ऑफ एंडोस्पर्म, परसिस्टेंट सेलस, पेरीफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, डिसइंटीग्रेटेड, सेकेंडरी न्यूक्लियस। गिव आंसर क्वेश्चन नंबर 80 फास्ट। Ruminate endosperm is found in reddish, mustard, mango, custard,
apple. Ruminate endosperm. Give answer fast. 82. Typical dicot embryo consists of radical only, embryonal axis only, cotyledon only, radical embryonic axis, cotyledon. 83. Test of the seed is produced from ovary ball, hilum, auto-integument of ovule, funicle. शीड की जो लेयर है टेस्टा कहते हैं कितों बनती है. गिव आंसर. रिप्लाई फास्ट. 83. 84. अब्यूल इंटेगुमेंट गेट ट्रांसपोर्ट इनटू शीड, फ्रूट बॉल, शीड कोट, कोटिलीडन. अब्यूल की जो लेयर है तो की बनता है. हेयर नैक्सट स्टडी द स्टेटमेंट करैक्ट का सिलैक्ट करो करैक्ट ये. पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस लाइंग बिटवीन रेडिकल एंड कोटिलीडन इज कॉल्ड हाइपोकोटिल. Pericarp can be dry or fleshy. Dicot embryo basal cell produce single cell suspensor. Primary endosperm nucleus is triploid. A, B correct, C, D incorrect, A, B, D correct, C incorrect, B, C, D correct, A incorrect, A and D correct, B and C incorrect. ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਤੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੂ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ मैच द फॉलोइंग. सैक्यूचेलम, शूट पैक्स, रेडिकल, कोलिराइजा एंड कोलीपटाइल, एपीब्लास्ट, रूट कैप. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋ. थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. 86 क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी. Process in which the haploid embryo is formed from the haploid egg without fertilization. Embryo भी haploid होंदा, fertilization नहीं होंदी. Apospory, agamospermy, apogamy, vegetative reproduction. Next is apomixis, type of reproduction that result in development of an new seed with fusion of gamete, embryo from nucellus, seed without fusion of gamete, embryo from endosperm. एपोमिक्सिस दिमाग च टर्म लैके आओ एपोमिक्सिस. थैंक्स. क्वेश्चन नंबर 89. डेवलपमेंट ऑफ द गमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर. एपोगैमी, एपोस्पोरी, ऑटोगैमी, होलोगैमी. 90 क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करैक्ट. ये गलत स्टेटमेंट दसो, इनकरैक्ट सिलेक्ट करो. Apomixis is form of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. Occurrence of more than one embryo in seed is called polyembryony. Apomixis occur in some species of Asteraceae and grasses. In the apospory, the cell of the embryo sac is diploid and they are formed from the diploid mother cell, megaspore mother cell. जल्दी से इसका आंसर दीजिए. इनकरेक्ट. 90 number question. Reply fast. And the last is an embryo which developed directly from the diploid cell other than egg, nucellus and integument is called adventitious embryo, recurrent agospermy, sporophytic budding. D, A and C. So friend, these were the important MCQs. This was the mock test from the sexual reproduction in flowering plant. और थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. एक्टिवली ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੋ ਡੈਟ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ. ਗਿਵ ਮੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲੋਡ ਮੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਵਾਚ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਰਿਪਲਾਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨੈਵਰ ਹੈਜੀਟੇਟ ਵਿਦ ਮੀ. ਥੈਂक्स वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. थैंक्स.